Hello students, this is Amit Kumar Gautam and you are watching my mathematics lecture of class 9th. And in my previous video we already have finished your PT1 syllabus, and in the today's video I am going to start your SA1 syllabus. And in SA1 syllabus there are few chapters, and out of these chapter I am going to start your fourth chapter, linear equation in two variable. So let's start the video without wasting a time. We follow NCERT chapter 4, and the name of your chapter is linear equations in two variable, right? What is the name of the chapter? Linear equation in two variable. So first of all you have to learn what is linear equation. I think you have to learn first what is an equation. Do you know what is an equation? An algebraic expression of the form. And मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को लिखनी भी नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझना है. An algebraic expressions of the form ax plus by plus cz equals 0, where a, b and this c all are real constant. We already talked about what are constant and what are real numbers, right? Where a, b, c all are real numbers and they may contain any value 1, 2, 3, 4, root 2, root 3, root 5, pi, 3 by 7 and any value, right? And x, y and z are variables. What? Variables, right? But there are three variables, right? But this equation contains three variables: x variable, y variable and z variable. But what is the name of the chapter? The name of chapter is linear equation in two variable. So in this chapter we discuss only about two variable equation. That means if the equation is of the form ax by plus c equals 0, right? What is the difference in these two equations? In this equation there is z along with c, but in this equation there is no variable with c. This means what? This equation may be of the form minus 2 equals 0. 2x plus 3y minus 2 equals 0. Yes, it may be. Or you can also write this equation in the form this, right? This equation contains two variables x and y, but this equation contains three variables and your one variable is x, y and z, right? As we study in polynomials, there are few category of equation and polynomial, and there is minor difference between equation and any polynomial. पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस क्या है? इक्वेशन में आपको इक्वल में कुछ लिखा हुआ मिलता है. इट मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, मे बी नेगेटिव नंबर, मे बी पॉजिटिव नंबर, बट पॉलिनोमियल में आपको इक्वल में कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? चलिए तो आगे देखते हैं. जिस तरह आपके पॉलिनोमियल में मैंने पॉलिनोमियल बताए थे, लीनियर पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड उसके बाद मैंने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसी तरह अगर हम इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन भी होती हैं, बट हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है. वाई? बिकॉज द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? लीनियर. लीनियर मीन्स विच कंटेन्स विद डिग्री 1, राइट? All the variables having 1 degree. In this example, the power of x is 1, the power of y is also 1, right? So what is the difference between polynomial and variable? Polynomial is generally given by इस तरह मिलेगा. वहां आपकी पावर 5 भी हो सकती है, 3b, 7b, 9b, 8b, कुछ भी हो सकती है, राइट? अगर हम इक्वेशन की बात करें वो भी टू वेरिएबल इक्वेशन की,
तो इक्वेशन में आपको इस तरह वैल्यू मिलने वाली है। ये आपका इक्वेशन है 1 डिग्री एंड 2 वेरिएबल। ये आपका पॉलिनोमियल है 3 डिग्री बट 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में डिफरेंस को जरा अच्छे से समझना है सभी को। सो वी डिस्कस्ड इन चैप्टर दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। सो अगर क्वेश्चन अगर आपका लिखा हुआ आता है कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन दिस इन जनरल फॉर्म, तो आपको इस गिवन इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 को इस फॉर्म में लिखना होगा। दैट मीन्स जो कांस्टेंट आपका 3 राइट हैंड साइड में है, इस कांस्टेंट को आपको लेफ्ट में यहाँ लेकर के आना है इन द प्लेस ऑफ c, और इक्वल्स में आपको ऑलवेज 0 ही बनाना पड़ेगा, राइट। चलिए तो इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पेज नंबर 68, एक्सरसाइज 4.1, right? And question number first, and what is the question? Your question is, and question first of this exercise is, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variable to represent this statement. It is given that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. That means the cost of notebook depends on the cost of a pen. Suppose, that means we have to suppose the cost of, suppose the cost of a pen is a rupees, right? Now according to question, what is the cost of a notebook? That means then the cost of notebook is, notebook equals 2 times to the cost of pen, right? But in this question we have to take 2 variables. We have to take 2 variables. Suppose the cost of pen is rupees A and the cost of notebook is rupees Y. Now according to question, cost of notebook equals twice the cost of pen. What is the cost of notebook? The cost of notebook is Y, because we suppose the cost of notebook is Y. And what is the cost of a pen? Cost of pen is A. So what are variables? There are 2 variables Y and A. You can take any 2 variable A, B, C, D, X, Y, Z, right? So Y equals 2A. You can say Y minus 2A equals 0. This is the standard form of the linear equation, right? Now we are going to question number 2, and the question number 2 is, express the following linear equation in form ax plus by plus c and indicate the value of a, b, c in each case, right? Your question number 2 is, express in form ax by plus c equals 0, right? And your first part of the question is 2x plus 3y equals 2x plus 3y equals 9.35 bar. Do you remember how we solved this kind of question? How can we remove this bar? Any number which contains bar is always a rational number, right? So we can change the given number 9.35 in its rational form. You don't need to change this, you directly can change the equation in standard form. That means 2x 3y, interchange this value to left hand side, you will get 9.35 bar, and you have to
also write the value of a and b. Whenever you compare this equation to this standard equation, you will get what? The value of a is 2. Value of a is 2 and the value of b is 3. And what is the value of c? The value of c is negative 9.35 bar. These are the required value of a, b and c. You have to write comparing the given equation with standard equation. We obtained a equals 2, b equals 3 and c equals minus 9.35. Similarly, your second part is x minus y by 5 minus 10 equals 0, right? This question can be done in two ways, right? Your first way is simply you can compare with bx plus c equals 0, right? Just simply compare, right? What is the value of a? The value of a is 1 because the coefficient of x is here what? It is x. What is the coefficient of x in this equation? It is b. But in the given equation, the coefficient is minus 1 upon 5. Why we take minus? Because in this standard form sign is positive and in this form the sign is negative, right? What is the value of c? The value of c is also negative. This is the second method. You can take LCM of 1 and 5, right? So the LCM of 1 and 5 is 5. You can change this equation in this form, right? Again take 1 in the denominator of 0 and simply cross multiply. You will get what? 5x minus y minus 50 equals 5 into 0 is what? Again 0. Now you can compare ax plus by plus c equals 0 and a equals 5, b equals minus 1 and c equals minus 50. Both methods are equivalently right and accurate. सो ये आपको ज़रूरत नहीं है कि ये आपने मेथड कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, अगर आपने ये किया है तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बोथ मेथड्स आर इक्विवेलेंट एंड द वैल्यूज मे बी डिफरेंट बट आंसर एंड मेथड आर सेम. एंड आफ्टर दिस is fourth part, x equals 3y, and you have to change this equation in standard form. So interchange in this form and compare with ax plus by plus c equals 0. What is the value of a? The value of a is 1. The value of b is minus 3. But in this equation the value of c is what? क्या c यहाँ है? No. So the value of c is 0, right? This is sixth part and it is important part. 3x plus 2 equals 0. अब ये इक्वेशन तो लीनियर है and it contains one variable, only x variable, right? So y variable आप कहाँ से लगाओगे इसमें? कैसे लगाओगे वेरिएबल? So watch carefully. 3x प्लस, अगर इसमें 0 का मल्टीप्लाई करके y लिख दें और प्लस में 2 लिखें, क्या प्रॉब्लम होने वाली है? क्वेश्चन को बताइए. देयर इज नो प्रॉब्लम. Why? Because the coefficient of y is 0 and now in this equation there are two variables x and y and the equation is also linear. Now compare with general equation plus this. Now the value of a is 3, value of b is 0 and what is the value of c? The value of c is 2, right? Similarly you can do the seventh part of the same question, but you have to do yourself seventh part, and your eighth part is 5 equals 2x. In this kind of question what you have to do? You have to just replace 5, interchange 5 to right hand side. You will get this kind of equation, right? And इस इक्वेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सेम 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल 0. अब इक्वल इस इक्वेशन के इधर हो
तो भी ठीक। अगर ये इक्वेशन सपोज करिए इस काइंड का होता लाइक दिस, तो भी ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं और बिल्कुल ठीक फॉर्म में लिखी हुई हैं। आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगी, राइट। अब अगर आपको यहाँ से कंपेयर करनी है, इससे कंपेयर करिए, इससे करनी है, इससे करिए। बोथ आर नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ बी इज 0 एंड वैल्यू ऑफ सी इज -5, right? See carefully, these are the required value of A, B and C. And now our next concept is solution of linear equation. As we discussed in chapter polynomial, what is the root of polynomial? So हमने उसमें लिखा था if 5x plus c is a polynomial, so the value of x की एक ऐसी वैल्यू, राइट, जो आप इसके अंदर पुट कर दो और वो उस पोलिनोमियल को कंप्लीटली 0 पर अप्रोच करा दे। तो दिस इज द रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सिमिलरली इन द इक्वेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वेशन, सपोज दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो a value of x and y, because in this equation there are two variables, so we always talk a pair of solution. पेयर मीन्स x, y का टाइप का पेयर आएगा आपका। x की एक अलग वैल्यू होगी, y की एक अलग वैल्यू होगी, दोनों को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो यहाँ वैल्यू बनेगी वो राइट साइड के इक्वल अगर बन गई तो x और y की वो वैल्यू जो आपने इसमें पुट करी है इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बन जाएगी, राइट। चलिए तो एक बात करते हैं क्वेश्चन की। 2x minus y equals 3. This is an example. Suppose 2x minus y equals 3 is a linear equation and you have to find 5 solution to this equation, right? So how can you find solution? तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। This is the method to find a lot of solution for any equation, right? आपको इस तरह की टेबल बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ टेबल and write x variable here and y variable here, right? And substitute any value to the place of x. x के प्लेस पे आपके कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है, राइट। सपोज करिए मैंने 0 पुट करा, राइट। अब x को आप यहाँ 0 पुट करिए। So 2 into 0 is 0. That means this term is finished. So what is the value of y? Now the value of y is -3. Value of y is -3. अब x की एक नई वैल्यू चूज करिए अपने मर्जी से, कुछ भी। Suppose I take 1. Now substitute 1 in the place of x. Substitute 1. 2 into 1 minus y equals 3. 2 into 1 is 2 minus y equals 3, right? Interchange this 3 to left hand side and interchange y to right hand side. You will get 2 minus 3 equals y, and right, and when you subtract 3 from 2 you will get y equals -1. That means when we substitute 1 to the place of x we get -1 in the place of y. This means what? This means 0, -3 is a solution to this equation and 1, -1 is again a solution to this equation, right? So how many solution exists to this equation? So for a single equation infinite solution exists, right? So for any single equation there are infinite number of solution. Again you can take any value. Suppose I take 2. Now you can put 2 to the place of x and get the value of y. 2 to the 4 and 4 minus 3 is 1. The value of y is 1. Again put 3 in the place of x in this equation. 3 to the 6 and subtract 3. You will get 3. Again put 4 to the 8 minus 3 is 5.
So there are infinite number of solution can be for this equation, right? And you can, किस तरह आप इन सबको इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलोगे? तो आप इस तरह बोल सकते हो 0, -3, 1, -1, 2, 1 and so on. All are the solution for this given equation, right? And the next exercise 4.2 is totally based upon to finding the solution of any given equation, right? And your first question is, which of one of the following option is true and why? The question is y equals 3x plus 5 has option first a unique solution, option second only 2 solutions, and option 3 infinitely many solution, right? Infinitely many solution, right? तो मैंने आपको बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर वो 2 वेरिएबल के अंदर है ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज हमने अभी फाइंड भी किए हैं थोड़ी देर पहले, राइट? तो आपको इसके क्वेश्चन के लिए यही बताना है व्हाई दिस इक्वेशन इज हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट? So you have to write this reason. So first option is wrong because in first option you are given a unique solution. No, only 2 solution. This is also wrong. Why? Because any equation in 2 variable but it must be linear always contains infinitely many solution. Why it contains many solution? Reason. If we choose some values to the place of x, then we get their corresponding value. Corresponding values of y. अगर हमने x की कुछ वैल्यू चूज करी उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें y की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तो x पे डिपेंड करता है टोटली। जैसे आपने x को वैल्यू पुट किया तो आपको y की नई नई वैल्यूज में मिलनी शुरू हो जानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड हाउ कैन वी गेट दीज सॉल्यूशन? सो मेक दिस टेबल for x and y. This is x variable and this is y variable, right? And your equation is what? Your equation is y equals 3x plus 5. अब x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करिए, substitute 0 here, right? 3 into 0 is 0, that means y equals 5. When you put x equals 1, x की वैल्यू 1 पुट करिए, 3 into 1 is 3 and 3 plus 5 is 8. इस बार x की वैल्यू 2 पुट करिए, 3 2 is 6, 6 5 11. Again substitute 3 3 is 9, 9 and 5 it is 14. So there can be infinitely many solution for the given equation. And your question number 2 is write 4 solutions. Question number 2, write any 4 solution to the following equation. And your first equation is 2x plus y equals 7, right? तो आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, y equals 7 minus 2x. इसको इंटरचेंज करके आपने एक नया रिलेशन इस तरह बना लिया, राइट? नाउ the required 4 solutions are given by
suppose this is variable x and this is y, right? Substituting, you have to write substituting x equals 1 2 3 and 4, राइट? पहले आपको 1 पुट करना, फिर 2 3 and 4. आपने 1 पुट किया, यहाँ करिए 1 पुट करिए जरा. 2 1 जा 2, 7 minus 2 is 5. Substitute 2, 2 2 जा 4 and it is 3. Substitute 3, 3 2 जा 6 और 7 में से 6 माइनस करेंगे आप, 1 मिलने वाला है. Substitute 4, 4 2 जा 8, 7 minus 8, 7 minus 8 is -1. तो इसकी ये वैल्यू बहुत हो सकती है, बिकॉज किसी की भी कोर्सपोंडिंग में आप इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये आंसर आपका बुक से मैच हो भी सकता है, नहीं भी. तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बुक से ही मैच ही हो, बिकॉज यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और आप लोगों ने उन सब सॉल्यूशन में से सिर्फ 4 ही सॉल्यूशन लिखे हैं. तो बुक का आंसर, आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट आंसर इज 100% करेक्ट, राइट? इट इज 100% करेक्ट, राइट? बट कंडीशन ये है कि आपने अच्छे से सोल्व किया हो, कोई मिस्टेक ना की हुई हो, राइट? So in the same way you can do all the parts of the question, and there are 3 parts, part 2, part 3. And in the question number 4, check which of the following are solution of the equations x minus 2y equals 4 and which are not. Question number 3. Equation is x minus 2y equals 4 and you have to check for 0, 2. आपको चेक करके बताना है 0, 2 is a solution for the given equation or not, right? So substituting x equals 0 and y equals 2 in the given equation, right? You have to write substitute x equals 0 and y equals 2 in the given equation. You will get 0 minus 2 into 2, right? This will be what? चलिए अलग अलग सोल्व करते हैं. This is left side of the question. LHS is what? X minus 2y. This means 0 minus 2 into 2. 0 minus 4 and this is -4. But what is the right hand side of the question? The right hand side of the question is 4 and left hand side is -4. This means what? This means both sides are different. Whenever both sides are different, the given point is not a solution, to the question, right? Similarly, you can check the following points for same equation, and there are 5 points you have to check. 2, 0, 4, 0, √2, 4 √2. तो मैं आपको 4th पार्ट बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन 3 and part 4, √2 and 4 √2. This is 4 √2 and the equation is x minus 2y equals 4. Substituting x equals √2 and y equals 4 √2 in left hand side as well as in right hand side. And this is left hand side, x √2 minus 2 into y. What is the value of y? 4 √2. This is √2 minus. मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई करनी है. रूट की आप कभी भी मल्टीप्लाई मत करिएगा नंबर के साथ. रूट की मल्टीप्लाई सिर्फ रूट के साथ ही करेंगे, राइट? 2 4 जा 8. नहीं, नाउ दिस इज 8 टाइम √2 and this is 1 time √2. So 1 minus 8 it is -7 time √2. This means what? This means the 4th point is not a solution, right? तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं. तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल. स्टे होम, स्टे सेफ.